Good morning, friends. This is Abhishek here. From today onwards, I have started the solving the IT questions which can be asked in upcoming SEBI and NABARD exam. Okay, so NABARD is around the corner. I think on 20th of December is NABARD is going to be held. Okay, and 10th of January is the prelims for the SEBI. Okay, so I have taken a few of the important questions on a below topics like DBMS, networking, operating system. Oops. Okay, so it should be oops. Okay, so and then algorithm, it should be oops. Okay, and then software engineering and literacy. There are multiple questions are there. Okay, so that I will be going to discuss one by one. Okay, so let's start. This is an I think this is not the first question. This is the first question. Okay, so the question is which of the following. I think this cursor is moving differently. Yeah. So which of the following is not a characteristic of the red? Redundant area of independent disk. Okay, this is the full form of red. Okay, so if you see here, so question has been asked so about the red. If you don't know what is the red, so you cannot answer. Okay, so red full form is redundant area of independent disk. Okay, so we are going to remove the redundancy, duplicacy of the data. Okay, so basically this red what we are doing to create the backup. Okay, and during the failure, so we create the backup of the data. Okay, data, and during the failure we make sure data should be recovered correctly. Okay, so there are multiple red 0, red 1, red 10, red 3, 5, 6. Okay, so this is suppose if we talk about the red uh, 0, so what exactly we are doing? Suppose we have a data like A, B, C, D. Okay, this is a bunch of data we have. Okay, so what exactly red 0 is doing? Red 0 is creating a data stripping. Stripping means what? It's creating a database. Suppose it's creating database. It's in this it kept as a and B. There is another database is created. Okay, and then C and D. So basically, what they are is we are stripping. That means we are distributing the data in multiple disks. Disk one, disk two. Okay. So this is the concept of red 0. Okay, so what exactly it is there in stripping? That's no redundancy. You see, all the data is separately, so that is fine. Performance is high, anyone can directly. Fault tolerance, if this data is got failed or if this data got deleted, so can be recovered. There is no option to recovery in the red 0. Okay, so if you see the question, the which of the following is not a characteristic red 0? So fault tolerance, if there is a data which is lost, you cannot recover from the red 0. Okay, so let me give you some overview of the red 1, 2, 3, and 4. Okay, so one red 1 is what? Mirroring. We are making sure data is mirrored out. Okay, so what exactly? Suppose there are data is A, B, C, D. Okay, there are four types of data. Okay, so what we are doing in this? Okay, so we are making sure data is get mirrored. Okay, so we are creating in a disk. Okay, here we are storing the data. Here if I talk about, here we are keeping this A, in this we have A, B, C, D. Suppose in one disk we store all the data. Okay, so for that also we created the mirror. So A, B, C, D. Okay, so this is what we are making sure data is get mirrored out. Okay, so in this case, if this disk is failed, B data got failed, so still we have another disk which has the same data, so we can recover. Okay, so in this case there is fault tolerance is also there. Okay, but not in red 0. Okay, and then we have a third option that is called a red 3. Okay, red 3. Okay, we have red 3, then red 5.
red 5, then red 6. Okay, so see, this is the one thing I just wanted to, here we create the parity. Parity in the sense which means, suppose this one data A. I'll let you know what is the parity. Data A is having suppose 1 0 1 1. Okay, data B is there. In this we have 0 1 0 0. Okay, so parity means we are making sure this XOR. We're performing the XOR. Okay, so if you perform the XOR, so 0 1 1 1 0 1. Okay, sorry, this is the also one. Okay, so this is parity. So if data B is fail, so how we can recover the data? Data B is equal to data A XOR parity. So if you do this, you will easily recover the data B. Okay. So here, here the only difference is if one data is failed, still we can recover. Here we create the parity in one. We create one disk. Okay. In this disk, we maintain the parity. Okay. In this, we maintain the parity in red 3, but red 5 we maintain a parity in multiple disk. Okay, disk 1, disk 2, disk 3, anywhere we can maintain. Okay, these two is if one disk is fail. If one disk is fail, we can still recover. But this red one, we also create the parity here, but we create a multiple parity. Okay, so if more than one data is failed, so you cannot recover. More than one disk is failed, you cannot recover through the red 3 or red 5, but easily you can recover the red 6. Okay, so in my upcoming videos, you will see how the red functionalities worked. I will going to explain you. Okay, but as of now, you need to understand this one. Now let's go to the next question. Okay, so here we have this SQL question. Okay, so which of the SQL class execute the first internally? Okay, so if you see this basic structure of the SQL, we should have some like select, sorry, select star from table where condition. Okay, so this is actually the, I can say, the basic structure of the SQL. Okay, so here we have the order by, select, from, where. So which one internally execute? Okay, select. So it is going to select something, but what it is going to select first we need to decide, right? So from table, that means we are going to select something from table. Then condition, where is the conditions? See how it is working. Let me just give you an example here. Suppose this is ID 1, 2, 3. This is the ID, name A, B, C. Okay, so suppose you wanted to select, you wanted to face the, what is the uh, name of the person whose ID is 2. Okay, so which one is first you are going to select, but where you need to find, right, where you are going to select. Okay, so which tables, first thing from will be going to execute as per my understanding. Okay, so from is it will decide which locations, right? Location means the table, in this which table. Okay, so from will execute first, then it will going to where the condition second. Okay, this is that, if I select here, this from is the first priority will go, then where the second, then third. Okay, I think this is the third one, order by, if you wanted to order by. A third one, I think this one, and order by is fourth one. Okay, as per my understanding. So this sequence it will going to execute the our result. So in this case, our right answer is from. Okay, guys. Now let's go to the third question.
इफ़ यू फील लाइक एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, अगर आप लोग को लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा वो चीज़ें या जो भी है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को बता सकते हो मुझे, ठीक है। अब देखो, अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से है, जिसमें हम शेड्यूलिंग करते हैं ना, कि कौन सा शेड्यूल है, कौन सा प्रोसेस जो है पहले शेड्यूल होगा बाद में होगा, ठीक है। तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम है, टाइप्स है। तो ये हमारा बोल रहा है कि विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मे कॉज द स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? स्टारवेशन का मतलब कोई चीज़ इनडिफिनिट टाइम के लिए वेट कर रही है। तो ये किस में हो रहा है? अगर आप देखोगे वन बाय वन करके, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को, तो पहला है FCFS, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। सो अगर इसमें देखोगे तो जो भी प्रोसेस पहले आएगा वो पहले उसको एग्जीक्यूशन होगा CPU के द्वारा, ओके। जो बाद में आएगा तो वन बाय वन करके होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आता है स्टारवेशन का, ओके। अगर देखोगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो जिस जिस जॉब की टाइम ड्यूरेशन सबसे कम होती है, मतलब कि जो प्रोसेस कम टाइम में एग्जीक्यूट होगा, उसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करेंगे, और जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसको बाद में। ये होता है RR का मतलब राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई प्रोसेस है, A है, B है, C है, D है, तो मैंने बोला कि भाई इसकी एग्जीक्यूशन टाइम कुछ भी हो, मैं 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर उसके बाद स्विचिंग करूँ, कॉन्टेक्ट स्विचिंग होगी, फिर 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए ये होगा, फिर 2 सेकंड। तो ऐसे के कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो जाएगी। ये होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास ABC तीन है, इसकी प्रायोरिटी 2 दिया, इसकी 1 दिया, इसकी 3 दिया, तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें होता क्या है कि जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, उसका कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे कि मान लो कि इसका क्या नाम है, ये एक B एग्जीक्यूट हुआ पहले, और B खत्म हो गया, CPU से हट गया, था B के प्लेस पे कोई तो नया प्रोसेस आएगा, मान लो कि उसका भी प्रायोरिटी 1 ही है या उसका 2 है, ठीक है। तो ये तीसरे वाले को इंडिफिनिट टाइम तक वेस्ट करना पड़ सकता है, राइट, कि मेरा कब नंबर आएगा। जो भी प्रोसेस CPU के अंदर आए जा रहा है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो जो लो प्रायोरिटी का ऑलरेडी CPU में पड़ा है प्रोसेस, दैट माई टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ओके। सो उस वजह से क्या होता है कि स्टारवेशन आ जाती है इसमें। इसी को बोलते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ओके। सो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसी साल ये क्वेश्चन आया था हमारे IBPS SOIT में, ओके। और अगर देखोगे गेट के या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फैंटम रीड एक्चुअली क्या होता है, अगर आप देखोगे तो फैंटम रीड सिर्फ इसको छोड़ करके, सीरियलाइजेशन है नॉन फैंटम के लिए एक आइसोलेशन के यूज होता है, बट इसको छोड़ दो, बाकी सारे तीनों फाइंड आउट करते हैं। बट अगर आप वैसे बात करो तो फैंटम रीड इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि फैंटम रीड में हम जितनी बार डेटा को फेच करना चाहते हैं, सेलेक्ट क्वेरी अगर चलाओ, तो आपको दो, ये तो इस डिलीट या इंसर्ट की वजह से जो न्यू डेटा क्रिएट होता है, न्यू रो क्रिएट होता है, डिलीट होता है, उससे हम डेटा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट करते, हर बार हमें नया वैल्यू आ रहा है। तो उसको, उस रीड को हम फैंटम रीड करते हैं। मान लो कि मैंने A = 10 लिखा, ठीक है, और B = 20 लिखा। अब किसी ने आके A = 10 रीड किया, ठीक है, मान लो कि कोई बंदा P था, उसने 10 को रीड किया, कोई बंदा Q था, इसने 10 को डिलीट मार दिया, ये 10 डिलीट हो गया। अब फिर से अगर P रीड करना चाहेगा तो P को तो मिलेगा ही नहीं वो डेटा, राइट। तो इसी को बोलते हैं फैंटम रीड। तो वो डेटा को डिफरेंट डिफरेंट रीड कर रहा है। तो अनकमिटेड रीड, अनकमिटेड भी होता है, रीड कमिटेड भी हो सकता है, या रिपीटेबल रीड, ये तीनों में ही फैंटम रीड पाए जाते हैं, ठीक है। बट अगर वैसे एग्जैक्ट बात करें तो हमारा फैंटम रीड रिपीटेबल रीड होता है, कि कोई भी डेटा जो रिपीट करने के बाद, रिपीट रिपीट जो डेटा होता है, मतलब कि जो दोबारा से रीड कर रहा है, वो डिफरेंट डिफरेंट रीड कर रहा है, तो उसी को हम लोग रिपीटेबल रीड करते हैं, ओके। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। देखो ये कुछ है LDPS, इसके पोर्ट नंबर है, जैसे कि हमारा DNS का हो गया, ठीक है, हमारा HTTP का हो गया,
हमारा एनटीए का हो गया, ठीक है। हमारा डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का हो गया, ठीक है। एसएसएल का हो गया, सेल्स का हो गया, ठीक है। इन सबके डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स है, पोर्ट्स को आपको रटना पड़ेगा। अगर एलडी एपीएस का बात करें तो हमारे इसकी पोर्ट की क्वेश्चन, हाँ, इस पोर्ट की जो है अ, क्या बोलते हैं, इस पोर्ट का जो है पोर्ट नंबर जो है 636, ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि आपको इसको याद कर सको, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये रटना पड़ेगा। और कुछ 15-20 तो है मेरे, अगर लेक्चर्स आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि मैं एक ही लेक्चर में सारे पोर्ट को कवर करवा दूंगा, कि तो किसी भी एग्जाम्स में अगर आ रहे हैं वो चीज़ें तो ऑलरेडी वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट एलोकेट द सीपीयू टू द प्रोसेस। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर हम लोग को प्रोसेस को डालना होता है। जो प्रोसेस को डालोगे तो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा है जो प्रोसेस को शेड्यूल एग्जीक्यूट करता है, मतलब प्रोसेस को एलोकेट करता है सीपीयू के अंदर, ओके। तो देखो कर्नाल तो एक तरह का, ये एक तरह का वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोल सकते हैं इसको। तो ये कोई नहीं, सीपीयू मैनेजर तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। सीपीयू को मैनेज करना है, ठीक है। दो चीजें, डिस्पैचर और शेड्यूलर। देखो शेड्यूलर क्या करता है कि जो कोई नया नया प्रोसेस जो क्रिएट होता है, ठीक है, रेडी स्टेट में जो प्रोसेस होते हैं उसको उठा करके सीपीयू में डालता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीपीयू को एलोकेट कर रहा है प्रोसेस को। जब प्रोसेस सीपीयू को एलोकेट हो जा रहा है तो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग डिस्पैचर से उस प्रोसेस पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्पैचर बोला जाता है। ओके, सॉरी गाइस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उप्स कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, विच फीचर यूज द फंक्शनल ओवरलोडिंग। ये तो बहुत सिंपल है, सबको पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज यूज फॉर द ओवरलोडिंग और ओवर राइटिंग, ओके। सो ओवरलोडिंग के लिए हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखना। विच प्रोटोकॉल यूज टू डायनेमिक असाइनिंग द आईपी एड्रेस टू दी डिवाइस ऑन नेटवर्क, ओके। सो अगर देखोगे तो डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ये क्या करता है कि तुम्हारा जो डोमेन हम लोग डालते हैं ना, .com, HTTP, www.facebook.com, तो ये हमारा डोमेन नेम है। इस नेम को हम लोग डोमेन नेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस नेम से हम पहचान सकते हैं कि हमारे कौन सा वेबसाइट हम ओपन करने वाले हैं। बट ये कौन से आईपी एड्रेस से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं वो कौन रिजॉल्व करता है, हमारा डीएनएस रिजॉल्व करता है। ये क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि अच्छा ये फेसबुक का आईपी एड्रेस है, इस सर्वर का आईपी एड्रेस, किस आईपी एड्रेस से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, तो ये डीएनएस यूज करेगा, ठीक है। ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक होस्ट क्या करता है कि ये डायनेमिकली क्या करता है कि कंप्यूटर को, सीपीयू को क्या करता है, आईपी एड्रेस, आईपी जो है असाइन करता है, ठीक है। एक मान सकते हो कि हम लोग एक लीज पे कोई आईपी एड्रेस ले लिया मैंने, ठीक है, हमारा 24 आवर के लिए। तो हर 24 आवर के बाद ये इसको हम लोग रिन्यू कराना पड़ेगा इस आईपी एड्रेस को, ओके। सो हमारा डायनेमिकली असाइन करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर आपका इसका वो भी पता होगा फुल फॉर्म भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, ओके। बाकी ये तो देखो एरर कंट्रोल के लिए होता है, SNMP, ये भी किसी काम के लिए ही होता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, ओके। सो अभी ये मैंने बताया डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि हमारा जो डोमेन नेम होता है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस, ओके। सो ये क्या करेगा कि टू रिजॉल्व द डोमेन नेम टू द आईपी एड्रेस, ओके। सो बेसिकली दिस इज द वर्क ऑफ द domain name server, okay. So to resolve the domain name, whatever the domain name we have, it will convert to the IP address so that we can find the सर्वर एंड वी कैन वर्क ऑन दैट, ओके। सो ये सारे आज के सारे क्वेश्चन थे। लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड लेट मी नो किसी भी टॉपिक पे आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।